Assalamu alaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss the achievements of genetic engineering. So let's move to the light board. Achievements of genetic engineering. So students, achievements of genetic engineering, जो जेनेटिक engineering की वजह से achievements हो सकी हैं उसके हवाले से आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करना है. So first achievement that is mentioned in our topic is insulin. So dear students, insulin इसके हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं previous lectures के अंदर. It is a hormone which is required to normalize the increased blood glucose level. जैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है जिसको हम हाइपरग्लाइसीमिया भी कहते हैं, उस हमारे जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स हैं दे रिलीज द इंसुलिन एंड दे लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल. बट अनफॉर्चुनेटली इन डायबिटिक पेशेंट्स, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, द डायबिटिक मिलाइटस, ठीक है, डायबिटीज़ मिलाइटस के जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो बीटा सेल्स हैं दे आर अनएबल टू प्रोड्यूस द इंसुलिन हार्मोन, सो दे फेस द इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया होने की वजह से उनके अंदर डिफरेंट तरह के जो सिम्टम्स हैं वो क्रिएट होंगे, जो कि उनकी बॉडी को वेरियस मैकेनिज्म्स के थ्रू नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं. तो उनके ट्रीटमेंट के लिए, डायबिटिक्स के ट्रीटमेंट के लिए डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1978 दे प्रिपेयर्ड द इंसुलिन. They extracted the insulin gene from the human chromosomes and then transferred it into the plasmid of bacteria and produced the hormone that is insulin. So that is a great blessing for the diabetic patients. In 1978, this is an MCQ, जिस ईयर के अंदर इसको प्रोड्यूस करवाया गया था. Now it is produced by using genetic engineering for the treatment of hyperglycemia in diabetic patients. Dear students, यहाँ पर बताता चलूँ, hyper means increased, glyce is for glucose, and emia stands for blood. So increased blood glucose levels is termed as hyperglycemia. आम तौर पर टेम्परेरी तौर पर जब भी खाना खाते हैं, जब भी कोई कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में जाता है तो आफ्टर इट्स डाइजेशन इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो उस वक्त भी वक्ती तौर पर एक नॉर्मल इंसान का ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है, लेकिन उसी के रिस्पॉन्स में इसको नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज वहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है और उसको नॉर्मल लेवल्स पे ले आती है. बट अनफॉर्चुनेटली इन द डायबिटिक पेशेंट्स इट इज़ नॉट गोइंग टू do this. So the diabetic patients needs exogenous insulin, so which is prepared by the genetic engineering. It is a great achievement for the diabetic patients. Another very important achievement of genetic engineering is human
growth hormone. So dear students, what is its another name? That is somatotrophic hormone. और डियर स्टूडेंट्स, ये कहाँ से रिलीज होता है? होपफुली आपको याद आ गया होगा, फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको पढ़ाया गया था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, या जिसको हम सोमेटोट्रॉफिक हार्मोन भी कहते हैं। इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ, फॉर द नॉर्मल हाइट एज वेल ऑफ द इंडिविजुअल। तो ऐसे फैमिलीज जिनके अंदर ट्रेंड होता है कि उनके जो कद हैं वो छोटे रह जाते हैं, इफ़ ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज उनको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट किया जाए तो उनकी हाइट जो है वो नॉर्मलाइज हो सकती है। सो इट वाज अ बिग इशू इन द प्रीवियस डेकेड्स। तो लेकिन अब जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से इस मसले को भी हल किया जा चुका है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन देता चलूँ आपको ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के हवाले से, कि जब जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्कवर नहीं हुई थी तो उससे पहले की बात है, अबाउट 500,000 ब्रेन्स ऑफ शीप were used to recover only 5 milligram of human growth hormone। 5 लाख भेड़ों को स्लॉटर किया जाता था और उनके ब्रेन वहाँ से निकाले जाते थे, और उन 5 लाख शीप्स में से ग्रोथ हार्मोन सिर्फ कितना एक्सट्रैक्ट हो रहा है? ओनली 5 मिलीग्राम। सो इट इज़ अ ह्यूज लॉस। सो नाउ by the blessing of Allah, through genetic engineering, human growth hormone is being produced by using a bacterium called as E. coli. The bacterium is E. coli. Dear students, this bacterium is heavily used in the biological research processes because its life cycle is of just 20 minutes. सिर्फ 20 मिनट में एक इकोलाई 2 इकोलाई में डिवाइड हो जाता है। इसी वजह से इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर भी और तमाम बायोलॉजिकल रिसर्च प्रोसेसेस में इस्तेमाल किया जाता है। सो बैक्टीरियम ई कोलाई was used, now it is used to produce human growth hormone on a large scale. So the scientists and the genetic engineers, they were able to make in 1977. उन्होंने द जीन फॉर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आइसोलेट किया और फिर इस बैक्टीरियम ई कोलाई के अंदर उसको इंसर्ट किया। ई कोलाई के अंदर मौजूद है वेक्टर दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड, उसके अंदर इंसर्ट किया। ये मैकेनिज्म मैं इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपसे डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। और उसके बाद फिर जब बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के जरिए रिप्रोड्यूस करेगा, सो इट मेक्स द कॉपीज ऑफ द जीन एज वेल एज इट प्रोड्यूसेस द हार्मोन। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अनदर अचीवमेंट ऑफ genetic engineering is beta endorphin. Beta endorphin, it is a strong painkiller. It is a strong painkiller which is normally produced बाय ब्रेन। ये हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। नाउ इट इज प्रोड्यूस्ड
through genetic engineering. Another achievement of genetic engineering is thymosin. So that is used against the treatment of brain and lung cancer, and produced through genetic engineering. Another achievement of genetic engineering is the production of vaccines. So इससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, हम अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर भी चुके हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आजकल जो मीडिया है उस पर भी इसका काफ़ी इसके हवाले से आपको हौनो मिल चुका होगा related to the corona vaccines. So vaccine, it is a material which carries a dead or weakened pathogens that has the ability to boost up or to provoke the immune system to produce some specialized proteins which are called as antibodies. So vaccines ऐसा मटेरियल होता है डियर स्टूडेंट्स जिसके अंदर डेड यानी मरे हुए पैथोजेंस या फिर वीकेंड का यहां पर मतलब है कि वो इतने वीक हों कि डिजीज ना प्रोड्यूस कर सकते हों, उनको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और फिर उससे वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम उनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, मेमोरी सेल्स बनाता है और अल्टीमेटली उनको किल कर दिया जाता है। नाउ द वैक्सीन्स आर ऑल्सो being made at a large amount by the genetic engineering. Two diseases have been mentioned in our book regarding the vaccines. One is of mouth and foot disease in cattle and goats and deers, etc. This is a viral disease. एक वायरस है जो कि बुरे तरीके से इन कैटल्स को इफेक्ट करता है और इनके माउथ और फुट्स में जहाँ पर हुफ्स होते हैं वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करता है। इनकी जो टंग होती है उसके ऊपर भी लेजन्स बन जाते हैं और इरप्शंस बन जाती हैं। तो इसके खिलाफ फिर जो है ये वैक्सीन इनको इनोकुलेट की जाती है। हाईली कंटेजियस डिजीज है, अगर एक हर्ड के अंदर किसी एक भी एनिमल को हो जाए तो वो पूरा का पूरा हर्ड जो है उससे इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह से देयर इज ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड द वैक्सीन अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। So dear students, hepatitis, it is the inflammation of liver, and as I have told you earlier that hepatitis is of various types: hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, hepatitis F and G. So these are multiple forms of this viral hepatitis, but among them hepatitis B and C, they are dangerous. Hepatitis B को हम काला जरकान भी कहते हैं और hepatitis C को हेपेटाइटिस बी को पीला जरकान कहते हैं और हेपेटाइटिस सी को काला जरकान कहा जाता है। हेपेटाइटिस सी की अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन सकी, जबकि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाई जा चुकी है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक और अचीवमेंट है जेनेटिक इंजीनियरिंग की, दैट इज यूरोकाइनेज। यूरोकाइनेज basically it is an enzyme that prevents blood clotting.
means it is anticoagulant. And now, my dear students, this enzyme has been produced through genetic engineering. Another achievement is interferons. These are the antiviral proteins. Antiviral proteins which are released by the infected cells. सो डियर स्टूडेंट्स, इसके हवाले से भी पहले जिक्र हो चुका है इंटरफेरॉन्स के हवाले से। ये ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि वायरस के इन्फेक्शन के नतीजे में प्रोड्यूस होती हैं सेल्स में, और ये प्रोटीन्स आसपास के जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, जो अनइफेक्टेड सेल्स होते हैं, जो अब तक इफेक्ट नहीं हुए उस वायरस से, पर्टिकुलर वायरस से, तो ये प्रोटीन्स उनको एक सिग्नल सेंड कर रही होती हैं कि दैट वी हैव बीन इफेक्टेड बाय द पर्टिकुलर वायरस, नाउ यू हैव टू इम्प्रूव योर डिफेंस। तो इसी तरह से इट इज ऑल्सो यूज्ड इन केसेस ऑफ ट्यूमर सेल्स। तो बेसिकली इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है दैट दीज प्रोटीन्स दे प्रोवोक द टी lymphocytes, and in T lymphocytes they provoke the natural killer cells. The natural killer cells, they kill these proteins and also the viruses and the cells of tumor. Dear students, यहाँ पर इंटरफेरॉन्स इनको क्यों कहा जाता है? इंटरफेरॉन्स इनका नाम सिर्फ इस वजह से रखा गया था इन प्रोटीन्स का, बिकॉज दे इंटरफेयर विद द replication and multiplication of viruses. So that is why they are known as interferons. Another achievement is of the achievement of genetic engineering is the treatment of blood diseases. तो मुख्तलिफ तरह की ब्लड डिजीज़ जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, आप प्रीवियस ग्रेड में भी उसको पढ़ चुके हैं, लाइक थैलासीमिया, which is a disease of RBCs and in which the hemoglobin is affected. थैलासीमिया में डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया था, अभी फिर बता देता हूँ कि हीमोग्लोबिन जो होती है इसकी 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स। इसमें से जो अल्फा चेन्स या बीटा चेन्स के एब्सेंट होने की वजह से ये डिजीज़ प्रोड्यूस होती है, जिसे हम कहते हैं थैलासीमिया। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एन अमेरिकन पीडियाट्रिशियन दैट इज थॉमस बी कूले, दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कूलेज एनीमिया। तो इस एज इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर, इसमें वो जीन डिफेक्टिव होता है जो कि नॉर्मल जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन की वो नहीं बनवा सकता। सो इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए वो जीन ऐड किया जाता है, नॉर्मल जीन ऐड किया जाता है इन द स्टेम सेल्स, ताकि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन है वो प्रोड्यूस हो सके। इसी तरह से इन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, sickle cell means a sickle shaped red blood cell. This is also a disease of RBCs in which the shape of the RBCs become sickle like this. So normal shape is spherical, तो वो इस तरह से हो जाते हैं। Now this sickle cell red blood cell is unable to carry oxygen and carbon dioxide.
So it will cause various disorders related to the oxygenation of the tissues. So dear students, इसको भी जीन थेरेपी के जरिए ही यानी कि इस डिजीज को ठीक किया जा सकता है. That is also another achievement of genetic engineering. इसी तरह से dear students, another disease that is hemophilia. Hemophilia, dear students, it is also a genetic disease and it is also called as a Royal's disease. In this disease, the person is unable to clot the blood. यानी जिस शख्स को ये बीमारी होती है उसमें ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस है वो नहीं होता बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें माइनर कट से भी, माइनर इंजरी से भी डेथ हो सकती है क्योंकि ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो सकता. तो इसमें भी जीन्स का ही इशू है. सो जो एबनॉर्मल जीन होगा, जो डिफेक्टिव जीन होगा या जीन एब्सेंट है, उसको रिमूव करके और उसकी जगह ऐड किया जाएगा नॉर्मल जीन फॉर एंटी हीमोफीलिया. और फिर द सेल्स नाउ विल दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द नॉर्मल clotting factors and the person can be cured. इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स आर नाउ मेड. नाइट्रोजन साइकिल में हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दे आर अनएबल टू यूटिलाइज द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. जो मेजर रेजरवायर है नाइट्रोजन का वो हमारा ये एनवायरनमेंट है. इसमें 78 to 79% नाइट्रोजन है, लेकिन प्लांट्स फिर भी उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते बिकॉज दे कैन ओनली यूज देम इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स. सो डियर स्टूडेंट्स, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए जेनेटिक इंजीनियर्स ने ऐसे प्लांट्स बना लिए हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड दे कैन मेक देयर प्रोटीन्स. और ऐसे प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत भी कम पड़ती है. सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.